Hello, hello students and welcome to Educational Journey. I'm live here and if you have any question regarding the Global Korea Scholarship GKS 2021 for the graduate degree programs, you can write your questions and I will answer your questions. Or if you have any question regarding the other scholarships in South Korea, then you can also write in comments and then I will answer your question. So the major requirement for the Global Korea scholarships are already uploaded in our uh, previous videos. So if you want to see or you are looking for some guidance regarding the Global Korea Scholarship GKS 2021, you can watch the playlist Global Korea Scholarship 2021 and you can also write comments there to if you have any question or you are confused about something. This is just a live session, so I'm not talking because I want to see your questions first and then I will answer your questions. Basically, the Global Korea Scholarship is designed to provide international students with opportunity to study or to get higher education in Korea and also experience the Korean culture and learn the Korean language. And there is uh, or there are two tracks to for the application. One is the embassy track and the other one is the university track. So there are some reserved seats or there is some quota for embassy track applicants and the university track applicants. And this quota is for the different countries. So each country has some specific number of seats or quota for this year's Global Korea Scholarship. For example, if you are from Bangladesh, then you have five reserved seat for Bangladesh through the embassy track, and similarly, if you are from Malaysia or any other country like Tunisia has also five reserved seats. Turkey has seven, Turkmenistan has six, and Uzbekistan has 12. I think the most number of reserved seats for any country is the Vietnam with the 28 and maybe the there is China, yeah, 31. So these two countries are having so many number of reserved seats for the candidates from Vietnam and China. And if you want to apply for the university track, then again you have some reserved seat for each country. So there are actually two divisions within this university track. One is general and other is regional science and engineering majors of regional university programs. So if you want to apply for the science and engineering programs in regional universities, then you should choose the universities from the type B. So type B universities are specific for the science and engineering majors in four of the regional universities. If you want
uh, to like appear, or you want to be a candidate for the general quota, then you can select type A university, and even you can apply science and engineering or any given major within one university. So actually the difference between these two quotas is, like, if you are applying for science and engineering in regional university, then you can select this quota. And if you want to apply for the type A universities for any program within that university, which is given in the Excel file uploaded on the official website, then you can apply for the general quota. So this is actually mentioned in the application form, which is a form number 1. Yes, Ranjana Yadav, this session is actually for the question answers. Ask your questions and then I will uh, answer your questions. So the major purpose of this session is to answer your questions, or if you need any further information for this scholarship. So I'm here to answer your questions, and I'm waiting for your questions. So if you have any questions, you can write and then I will answer. Yes, go ahead. You can ask any question regarding this Global Korea scholarship, or even you can ask for the other scholarships in South Korea as well. Yes, yes. You are from India. Okay. So for India, you have the quota for the university track. I'm waiting for your question as well. So for the university track, you have quota of 19 number of candidates or students or scholars on a general track, which is type A and type B universities, and 11 number of scholars for the regional science and engineering majors in regional university, which is type B universities. If you have any question, how do I apply? For the application process, I already uploaded and did some live sessions. So better to watch those two sessions again. Or if you have any specific question, then I will definitely answer. For the application process, like if you want to apply for the embassy track, so you will send your documents to the embassy in India, Korean embassy in India. Maybe it is located in Delhi. Yeah. So, and if you want to apply for the university track, then definitely you will send your documents to the university. And the one more thing, if you are applying for the embassy track, then you can select three universities. Okay, fashion designer. So have you selected or explored the universities list in the Excel file? So actually, first thing you need to find is which university or what universities are offering this major this year for the Global Korea Scholarship Program, because there are some departments which are included for this year's Global Korea Scholarship for each university. So fashion designer course, let me know if you have any university in your mind, or this university is already offering admissions for Global Korea Scholarship for the fashion designer course or fashion designer master's or PhD program. Uh, Sir, I wanted to choose chemistry from both type A and type B. Should I take general type of applications of science and engineering major of regional university?
No, if you want to select from both type A and type B, then definitely you will select the general quota. Otherwise, you can choose only type B universities and science and engineering major of regional universities. Ranjana Yadav, you can write in Hindi, Urdu, or whatever. Like I understand, or I can read Urdu, or you can write Roman. So I will answer your question. आपके लिए मैं कहूँगा कि सबसे पहले आपको एक यूनिवर्सिटी या 2 या 3 यूनिवर्सिटीज़ आइडेंटिफ़ाई करनी है, जो फैशन डिज़ाइन कोर्स ऑफ़र कर रही हूँ मास्टर्स और पीएचडी के लिए। ये स्कॉलरशिप मास्टर्स और पीएचडी डिग्री के लिए है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ वो यूनिवर्सिटीज़ कहाँ पे हैं। जस्ट अ मोमेंट। मैं ओपन कर लूँ ये एक्सेल फाइल इसकी, तो उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि यूनिवर्सिटीज़ में आपने कैसे फाइंड करना है। तो ये यूनिवर्सिटीज़ गिवन है और इनमें से आपको 1 बाय 1 फाइल, इस एक की फाइल है, इसके अंदर ही डिपार्टमेंट्स गिवन है, उनको ओपन करना होगा और फिर आपको उसके अंदर डिपार्टमेंट अपना देखना होगा कि क्या ये डिपार्टमेंट, जो डिपार्टमेंट आपका है, जो मेजर आपका है, वो ऑफर हो रहा है या नहीं। क्योंकि सारे डिपार्टमेंट्स उस यूनिवर्सिटी के इंक्लूडेड नहीं हैं, लेकिन मोस्टली हैं। मतलब एक यूनिवर्सिटी के अंदर वैसे अगर फॉर एग्जांपल 20 डिपार्टमेंट्स हैं तो 15 और 16 डिपार्टमेंट्स आर इंक्लूडेड फॉर द ग्लोबल कोरियर स्कॉलरशिप प्रोग्राम। Just a moment, actually, this Excel file is very big and it takes some time to open the file. So here is the file. ठीक है जी, आपको ये नज़र आ गई फाइल। आई होप आप देख सकती हैं ये फाइल। अब फॉर एग्जांपल मैं जाता हूँ बिल्कुल स्टार्ट की यूनिवर्सिटीज़ पे, क्योंकि अभी मैंने ये ओपन की हुई हैं बहुत। एकेडमी ऑफ कोरियन स्टडीज़, तो यहाँ पे तो तकरीबन ये कोरियन से ही रिलेटेड है। ठीक है, आजू यूनिवर्सिटी। अब आजू यूनिवर्सिटी के अंदर आपका जो मेजर है फैशन डिज़ाइन, यहाँ अभी कल्चर एंड कंटेंट्स, डिजिटल ह्यूमैनिटीज रीजन कंटेंट्स, एमएसओएम। तो इस यूनिवर्सिटी में अभी देखें ये नहीं है। ठीक है, अब बुसान यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन स्टडीज़, तो इसमें मुश्किल है क्योंकि ये फॉरेन अफेयर से रिलेटेड और ज़्यादातर इस तरह के सब्जेक्ट्स हैं इस यूनिवर्सिटी में। ठीक है, अब चोनम नेशनल यूनिवर्सिटी है, तो अब इसमें हम देखेंगे जी यहाँ पे डिज़ाइन। ठीक है, अब फैशन डिज़ाइन है, ये एंटरटेनमेंट एंड स्पोर्ट्स के अंदर है। अब इस यूनिवर्सिटी को आप सर्च करें, चोनम नेशनल यूनिवर्सिटी, और इनकी डिज़ाइन डिपार्टमेंट को देखें। क्या आपके डिज़ाइन डिपार्टमेंट, आपका जो डिग्री आप चाहती हैं, क्या वही है? और फाइन आर्ट्स, ठीक है, ये 2 मेजर हैं इसके अंदर। अब इनमें से आप एक चूज़ कर सकती हैं। उसके अलावा इस यूनिवर्सिटी में यहाँ पे और क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल्स, ठीक है, ये भी मतलब डिज़ाइन और इस तरह की चीज़ें होती हैं इसके अंदर भी। तो इसकी भी डिटेल्स आपको थोड़ी-सी वहाँ पे फाइंड आउट करनी पड़ेगी कि ये क्या मतलब डिग्री में क्या पढ़ा रहे हैं, क्या रिसर्च है, क्या चीज़ ऑफ़र कर रहे हैं मेजरली। अब यहाँ पे आ गया जी नेक्स्ट यूनिवर्सिटी, चुंगआंग यूनिवर्सिटी। तो इसके डिपार्टमेंट्स जो गिवन हैं
एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशन, मीडिया कम्युनिकेशन, सोशल वेलफेयर, अकाउंटिंग और फैशन डिजाइन। तो ये जो आपकी फील्ड है, तो ये थोड़ी सी स्पेसिफिक है, इसलिए यहाँ पे ये डिग्री होती तो हर यूनिवर्सिटी में है, लेकिन वो इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंडर थोड़ा सा इसमें कम स्कोप है। ठीक है, ये डिजाइन है, ठीक है, विजुअल डिजाइन, डिजाइन इंडस्ट्रियल डिजाइन, ठीक हो गया। आर्ट मेजर है इसका, ठीक है। और इसी तरह डिजाइन स्पेस डिजाइन, क्राफ्ट डिजाइन, डिजाइन फैशन डिजाइन एंड फैशन इंडस्ट्री। सो ये चुंगांग यूनिवर्सिटी है, ये बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, और इसका जो सोल कैंपस है मिड ऑफ द लाइक सेंटर ऑफ द सोल में है ये, बिल्कुल। और अगर यहाँ पे आपका हो जाता है तो सोल, तो वैसे ही लोग यहाँ पे तकरीबन कोरिया की हाफ आबादी या हाफ पॉपुलेशन इज इन सोल। तो ये बहुत बड़ा सिटी है, बहुत एक्सपोजर है, इंटरनेशनल स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हैं। इसी तरह ये देख लें आप, अब ये आपको 3-4 डिपार्टमेंट्स या मेजर्स मिल गए, ठीक है। अब आपने आगे खुद थोड़ा सा देखना होगा, यहाँ पे इसमें मास्टर्स नहीं ऑफर हो रहा, इसमें ये क्रॉस मीन नो, ठीक है, ये सर्कल मीन यस। तो क्रॉस मीन के ये वाली डिग्री मास्टर्स लेवल पे नहीं ऑफर हो रही, पीएचडी लेवल पे ऑफर हो रही है, यहाँ पे देखे ना, ठीक है। तो यू कैन सी फैशन, जो सिर्फ फैशन, ओनली फैशन लिखा हुआ है, ये पीएचडी नहीं ऑफर हो रही, सिर्फ मास्टर्स ऑफर हो रहा है, ठीक है। तो इसी तरह बाकियों में मास्टर्स और पीएचडी बोथ आर ऑफर्ड फॉर द ग्लोबल कोरिया स्कॉलरशिप प्रोग्राम इन आजू यूनिवर्सिटी। परफॉर्मिंग आर्ट्स में भी अगर कोई है, डिजाइन फॉर थिएटर एंड फिल्म, तो इसमें भी मास्टर्स है। लाइक इसके अंदर आपको काफी सारे डिपार्टमेंट नजर आ रहे हैं जो आपके रेलिवेंट हैं। Saeed, I will answer your question. Garima, yes, I will answer your question. Just a moment. Let me answer one question first, and then I will come next to your question. So, Chungbuk National University. I'm just trying to explain how you can find your department actually in which university or where it is available for the Global Korea Scholarship Program. ये फाइल आपको स्टडी इन कोरिया में मिल जाएगी, ठीक है। आपको मैं पहले सिखा चुका हूँ कि कैसे डाउनलोड करनी है। तो इसके अंदर अभी इंडस्ट्रियल ये है हाउसिंग एंड इंटीरियर डिजाइन, ठीक है। ये आपको हो सकता है एक मेजर चंबुक नेशनल यूनिवर्सिटी में, ये थोड़ा सा मेन सिटीज से हटके है, लाइक थोड़ा साउथ की साइड पे, फाइन आर्ट डिजाइन, राइट। तो इसी तरह से ये आपको थोड़े से यहाँ पे मिल गए एक दो मेजर्स आपसे रिलेटेड। चंगनाम नेशनल यूनिवर्सिटी में इसी तरह आप जाएंगे इस फाइल में, और यहाँ पे आप थोड़ा सा इसको मैं बढ़ा लेता हूँ इस साइड पे, ताकि इजी टू रीड हो जाए आप सबके लिए। आप रीड कर सकते हैं, या मैं जूम कर लूँ और इसको, आप सबको आसानी हो रही है रीड करने में। फाइन आर्ट डिजाइन ये हो गया, ठीक है, चंगनाम नेशनल यूनिवर्सिटी। अब इसी तरह देगू यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर भी आप यहाँ पे, ठीक है, फैशन, ये आ गया फैशन डिजाइन। तो देगू यूनिवर्सिटी में अगर आप ये फील्ड अप्लाई करती हैं तो मुझे लगता है कि ज़्यादा चांस है, क्योंकि ये एक और सिटी में है। देगू एक सिटी है साउथ में, साउथ कोरिया के बिल्कुल साउथ इलाका है। तो वहाँ पे जो है ये अब सही है, जूम काफ़ी है, रीडेबल है, इवन आई कैन इंक्रीज मोर, ओके। तो ये देखें, फैशन डिज़ाइन मास्टर्स और पीएचडी बोथ लेवल, हाउसिंग एंड इंटीरियर डिज़ाइन सिर्फ मास्टर्स। तो ये आर्ट एंड डिज़ाइन, फाइन विजुअल डिज़ाइन, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, आई डोंट नो अबाउट दीज फील्ड्स, बट yes, I can just recommend you for the fashion design or whatever is, I think it is related to your major. So इसी तरह फैशन डिजाइन बिजनेस, ठीक है, ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से फैशन पढ़ाएंगे आपको। उसी तरह से फॉर एग्जांपल अदर थिंग्स आर लाइक मेजर्स आर गिवन एज वेल। तो ये मुझे हर एक यूनिवर्सिटी के लिए इस तरह से जूम करनी पड़ेगी फाइल। जी, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ जी, किसका है नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आगे सारी चीजें,
अब यहाँ पे भी आपको कुछ फाइन आर्ट्स और इस तरह के इमेजेस मिल रहे हैं। अच्छा जी, वन बाय वन आई शुड गो फॉर द क्वेश्चंस। सईद अहमद, sir, I have so many questions. Sir, in university information folder shows the program under KGSP, right? And sir, Seoul National University के नीचे तो कुछ भी नहीं किया हुआ, सिर्फ डिग्री रिक्वायरमेंट दी हुई है। Seoul National University, let me open it. जी, यहाँ पे ये जो डिपार्टमेंट्स गिवन है ना, अब ये हानडोंग यूनिवर्सिटी में सिर्फ एक डिपार्टमेंट है, ये है होंगेक यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन अफेयर्स, ठीक है। तो इसमें ये इतने डिपार्टमेंट्स हैं। तो मैं आपको जरा दिखाता हूँ कि सोल नेशनल यूनिवर्सिटी का कौन सा डिपार्टमेंट गिवन है। लेट मी चेक। सोल नेशनल यूनिवर्सिटी आ जाओ भाई। जी, ये आ गई सोल नेशनल यूनिवर्सिटी सईद भाई। इसके नीचे देखें, काफी सारे डिपार्टमेंट्स गिवन है सईद अहमद भाई। तो आपका क्या डिपार्टमेंट है, आप मुझे बताएं जरा, मैं आपको फाइंड आउट करके देता हूँ कि यहाँ पे तो काफी सारे डिपार्टमेंट गिवन है, लाइक कोरियन, चाइनीज, इंग्लिश, लिंग्विस्टिक, कोरियन हिस्ट्री, एशियन वेस्टर्न हिस्ट्री, एंड देन मूविंग टू नेचुरल साइंसेज, मैथमेटिकल साइंसेज, स्टैटिस्टिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री। ये देखें जी, केमिस्ट्री, आई थिंक आप केमिस्ट्री कह रहे थे, राइट? आई थिंक आप केमिस्ट्री कह रहे थे सईद अहमद। मुझे याद है शायद प्रीवियस सेशन में आपने पूछा था क्वेश्चन। सो बहरहाल आई होप कि केमिस्ट्री है फॉर एग्जांपल, तो ये केमिस्ट्री गिवन है, ठीक है। और अगर आप केमिस्ट्री में केमिस्ट्री की जगह पे आप जो है किसी और फील्ड में भी अप्लाई कर सकते हैं मेजर में। फॉर एग्जांपल जैसे आप इंजीनियरिंग है तो केमिस्ट्री एंड मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग, तो ये क्वाइट मतलब सिमिलर हैं। अगर आप एक यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री में अप्लाई कर रहे हैं, यू आर अप्लाइंग थ्रू द एम्बेसी ट्रैक, तो आप यहाँ पे किसी और यूनिवर्सिटी में मटेरियल्स इंजीनियरिंग में भी, मटेरियल साइंसेज में भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से एनर्जी सिस्टम इंजीनियरिंग या एनर्जी इंजीनियरिंग में भी आप कर सकते हैं काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ में, जहाँ पे एनर्जी में एनर्जी मटेरियल्स के लिहाज से काम हो रहा है। जैसे अब केमिकल एंड बायोलॉजी इंजीनियरिंग, इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज दीज थ्री मेजर्स आर क्वाइट रेलिवेंट और बहुत ही मैचिंग है। तो इसके लिए आप सिंपल सा मतलब एक ही SOP आप लिखेंगे, पर्सनल स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, और उसके बाद आपका ये दो तीनों डिपार्टमेंट कवर हो जाएंगे अगर आप एम्बेसी ट्रैक के लिए अप्लाई करें डिफरेंट 3 यूनिवर्सिटीज में। ठीक हो गया। आप इसमें इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग भी है, सारे मेजर्स हैं, ठीक है। सईद भाई, सर आप ये यूनिवर्सिटी इन्फॉर्म डॉक्यूमेंट लिंक शेयर कर दें, मैंने सिर्फ सारे डॉक्यूमेंट डाउनलोड किए हैं, आई डोंट नो ये फाइल मेरे पास नहीं है। ये ट्राई अगेन बट आई डोंट। कोरिया स्टडी कोरिया के जो वेबसाइट है सईद भाई, उस पे ये गिवन है, एक्सेल फाइल है, ये देखें ना आप, एक्सेल शीट है, ठीक है। तो ये इस तरह मैं आप फिर से इस वीडियो के एंड पे या अभी कर दूं, जस्ट अ मोमेंट। बाकी स्टूडेंट्स, मैं ताकि सारे स्टूडेंट्स अपने क्वेश्चंस के जो है ना आंसर ले लें, तो आसानी भी होगी, एंड इस तरीके से मतलब वन बाय वन हम कवर करते जाएंगे, ठीक है। तो मैं ये लिंक शेयर करने लगा हूँ अभी, आपको मैं ये दिखा भी देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने ओपन की वेबसाइट, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट्स हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, ये फॉर्म्स हैं डॉक्यूमेंट्स में जो आपने डाउनलोड करके फिल करने हैं। ये वाले फॉर्म आपने, ये सेकंड वाली जो फाइल है, ये वाली मस्ट आपने डाउनलोड करनी है, ठीक है। इसको आपने फिल करना है इन्हीं फॉर्म्स में, डॉक्यूमेंट्स में। और ये कोरियन आपकी जरूरत नहीं है, ये एक्सेल फाइल है आपके लिए, ये इंपॉर्टेंट है एक, ये देखे ना, AXLSX, ठीक है। ये एक्सेल फाइल जो है, ये वाली फाइल मैं को ये, ठीक है, ये डाउनलोड कीजिए, इसके अंदर है ये सारी, ठीक है। ये कोरियन इंग्लिश वाली, ये जो हानगिल लिखा हुआ है ये आपने डाउनलोड नहीं करनी, ये है कोरियन है, ठीक है। और ये इंग्लिश की गाइडलाइन है, ये वाली, ये सेकंड लास्ट, ठीक है। आई होप कि आपको आपका क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो गया।
और मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके ओके, ये मैं पोस्ट कर दूं आपको यहाँ पे नीचे, और बाकी के क्वेश्चन वन बाय वन मैं आ रहा हूँ, ठीक है? तो ये आपको आ गया जी आपका लिंक। Sir, in our university, Bachelor's of Science degree has 3 subjects. So my transcript includes those 3 subjects, but one of the Korean university said we do not accept transcript with 3 subjects. 3 subjects mean only 3 subjects. How is it possible? ये बैचलर ऑफ साइंस डिग्री जो है ये 4 ईयर डिग्री है, आप ये कह रही हैं? काइंडली लिख दें नीचे ताकि मुझे क्लियर हो जाए आपका क्वेश्चन। सर, व्हाट शैल आई डू द सब्जेक्ट taught or mentioned there? I do not think it shall create problem. Shall I ask? Hmm. So there are some people from other countries as well. So I'm going to cover in both languages, like Urdu, Hindi, and as well in English, so that the other students can also get the idea about these questions and their answers. So Garima, you wrote that your degree or Bachelor of Science degree has 3 subjects. So my transcript includes those 3 subjects. 3 subjects mean what? What does it mean? Only 3 subjects, or like you are majoring in physics, chemistry, math, or physics, chemistry, biology, right? Like this, because in previous years in Pakistan we had some 2 year Bachelor of Science, and the major was like double math physics, or math physics chemistry, or computer physics math, something like. So I want to know, because your question is not clear to me, so please write it again, and then I can answer your question. So the next question was again sequence to your first question. So please write again so that I can answer your question. Sir, different major डाल सकते हैं जी? शाजिया नोरीन, yes, you can write different majors, but not like totally different. Like if you are from law college and then you want to apply to science, no, you cannot do this. But if you are moving within like social sciences, yes, you can move from one department to other, which is related, and you know the basics about that डिपार्टमेंट और दैट सब्जेक्ट। लाइक उस सब्जेक्ट की आपको बेसिक्स तो पता होंगी ना, कुछ सब्जेक्ट्स तो मैथ कर रहे होंगे। इस तरीके से अगर इफ यू आर फ्रॉम अ साइंस और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट लाइक केमिस्ट्री, देन केमिस्ट्री, केमिकल इंजीनियरिंग, बायोटेक, सॉरी नैनो टेक्नोलॉजी, and material science or material engineering, these are quite similar, so you can apply to 3 different majors in 3 different universities. Okay, each major for one university. I'm talking about the this embassy track. For the university track applicants, you can apply to only one university and one department. तो आपको यूनिवर्सिटी ट्रैक में सिर्फ एक ऑप्शन है कि आप उसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे और सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट सिलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर आप एम्बेसी ट्रैक में अप्लाई कर रहे हैं, देन यू कैन सिलेक्ट 3 यूनिवर्सिटीज एंड यू कैन सिलेक्ट वन डिपार्टमेंट फॉर ईच यूनिवर्सिटी। क्या उसके लिए अलग अलग एसओपी लिखनी होगी? एसओपी मैंने जैसे बता दिया आपको कि सिमिलर अगर मेजर्स हैं तो फिर एसओपी एक ही होगी, सिर्फ एक ही दे सकते हैं आप एसओपी। आप ज्यादा एसओपीज मतलब 2-3 एसओपीज हर यूनिवर्सिटी के लिए डिफरेंट नहीं दे सकते, क्योंकि सेम डॉक्यूमेंट्स आपने उन्हीं की कॉपी भेजनी है सबको। So you cannot write 3 or 4 SOPs, just single SOP and mention, so that you can cover, select the departments which are relevant, and then you can write single SOP for all these departments. मैंने सईद भाई आपका लिंक शेयर कर दिया, आई होप यू गॉट इट। मेरा केमिस्ट्री सर, मेरा केमिस्ट्री नेचुरल साइंसेज है, हाँ ठीक है।
आपको मैंने आंसर कर दिया, आपका केमिस्ट्री है तो आप केमिस्ट्री, मटेरियल साइंस, केमिकल और इस तरह की अगर बेस्ट टैक्स अप्लाई करते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं. Yes, Sabri, Nesreen Sabri. Hello, please. I have a question. Do we apostle the photocopies of the original documents and then make 3 copies of it for the embassy track? For the documents, each copy should be apostilled or notarized. This is the rule. Get 3 copies of your transcript and get the notarization. And again, for the transcript, 3 copies, get the notarization or get these documents notarized and then send. Please tell the link from where you can apply from the embassy track. Uh, Ranjana Yadav, I think you are from India, right? So I should search Korean embassy in India. So here is the Korean embassy in India. This is the link for embassy actually, and I hope they made some announcement or something. So I am going to visa notice activities. There is nothing mentioned here actually, so I am going embassy news, press release. Let me check this one. Other students can write their questions. I'm live here to answer your questions. You can write your questions and then I will answer. No, nothing is mentioned here. Mostly it is in the education section. This is not the link. Korea Today. Here. You can click on this one. Graduate degree programs. So it is moving to the Facebook page or something. Korean Embassy India. So I'm going to read other questions. Meanwhile, this is opening. I don't know what happened to Facebook मेरा. Yes. जी सईद भाई, आप जा सकते हैं इंजीनियरिंग में. आपका मेजर केमिस्ट्री है. अगर आप मटीरियल साइंस, मटीरियल इंजीनियरिंग इस तरह के किसी मेजर में अप्लाई करना चाहते हैं तो जा सकते हैं. I'm sending this link. It is not working maybe here or something. Yes, it is working now. So you can open the link and then you can. Actually, there is no online application, Ranjana Yadav. This is just an information from the embassy. You need to send each and every document to them by post. All the applicants must send their application to the following address of the Ministry of Education, Government of India before deadline. Okay, so you will send to the Ministry of Higher Education in India, and then they will forward your application to the Korean embassy, and they will proceed with it. So this was the answer to your question. Next question is from Sir. I'm applying from Morocco. Yes, I answered your question. You need to get the notarization of your documents, each copy. And then Palak, sorry, what is the name? Yadav. Sir, consider that if I got the Kgsb scholarship and the Korean reaching time is last February, but my board exam will get over somewhere on April. So can I go afterwards with the scholarship? Board exam mean you want to apply for the bachelor's like BS program. This we are talking about the masters and PhD program here in this session.
For the undergraduate, they will open the applications in September. So mostly the deadline is 15th of October, and then you can apply in September and early October. So if you can write that if you are applying for the master's and PhD, then I can give you further detail. Three subjects with four papers each, total 9 papers. Three subjects with four papers each, total 9 papers. Is it 2 year degree or 4 year degree? Let me know, please, quickly, because I have to answer others as well. So I want to know if it is a 2 year degree or 4 year degree. Right? Uh, I'm waiting for your comment or so that I can answer. Please quickly so that I can answer the questions, other questions. Meanwhile, I am moving to next question. ट्रांसक्रिप्ट मतलब जैसे हमारे यहाँ पर सेमेस्टर 1 मार्कशीट मिलता पूरा मिला के 6 मार्कशीट मिलती हैं, इसका मतलब ट्रांसक्रिप्ट होता है क्या? जब आप डिग्री कंप्लीट करते हैं या 7th सेमेस्टर 8th सेमेस्टर में होते हैं तो आपको एक रिजल्ट कार्ड मिलता है यूनिवर्सिटी की तरफ से जिसमें आपके प्रीवियस ऑल 7 और 6 सेमेस्टर्स का रिजल्ट दिया होता है. अगर आपने डिग्री कंप्लीट कर ली है, if you have already completed your degree, then you will get 8 semester transcript for the bachelor's BS, bachelor's in science or engineering. Then you will get 8 semester results, and for each semester they mention the each like 6 or 5 subjects and your CGP or percentage and grade or something. Documents को just notarize करेंगे तो चलेगा. Yes, you need to just notarize your documents mean transcript and degree, copies of transcripts and degrees, copies of transcript and degrees. For the application forms there is no notarization. It is not required to get notarized these application forms. Always your degree and transcript. तो हर दफा सिर्फ आपको डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट ही नोटराइज कराना होगा. डॉक्यूमेंट्स को जस्ट नोटराइज करेंगे तो चलेगा. यस, ओके, थैंक यू सो मच सर, यू आर वेलकम एंड आई होप you can get the answer from this session. सईद सर, स्टडी प्लान के लिए मुझे सब्जेक्ट कोर्स मिल रहे हैं विद कोर्स, जैसे कि 24 को एक सेमेस्टर में कंप्लीट कर है, बट आई डोंट गेट. I don't know what you want to write. सईद अहमद, क्या आप लिख रहे हैं? लाइक जैसे यूनिवर्सिटी में होता है तो आपको एक ट्रांसक्रिप्ट मिलती है जिसमें आपका हर सब्जेक्ट उसका परसेंटेज और जीपीए और ग्रेड, इनमें से 3 में से एक जरूर लिखा होगा. तो एट द एंड ऑफ सेमेस्टर सारा ओवरऑल सीजीपी लिखा होता है फॉर 1 सेमेस्टर. लाइक फॉर एग्जांपल 3.21 ओवर 4 आउट ऑफ 4. तो आपको वो लिखना है. अगर आपको वो नहीं लिखा, आपका नहीं लिखा हुआ, तो आप परसेंटेज लिख सकते हैं और परसेंटेज को आप कन्वर्ट कर सकते हैं सीजीपीए में एज वेल. मैं आपको दिखाता हूँ कैसे कन्वर्जन करनी है. आपने यहाँ पे एक फाइल गिवन है. अगर आपने ये पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर लिया तो इसका पेज नंबर है पेज नंबर 21. सो यू कैन कन्वर्ट योर परसेंटेज इनटू सीजीपीए for the scale 4. Always mention the scale as well when you are writing in your application forms. So better to change to scale 4 because usually 4 scale is used. So that, for example, your percentage is 85. You can mention 3.07 or 3.14, or you can mention 3.10 as your CGPA over out of 4. So this is the conversion table given officially by the NIIED. Ranjana Yadav, for Indians, we have to send our document to MHRD first, then MHRD will send documents. Yes, exactly. You are right. Thank you.
And sir, do we have to send our degree after completion by postal mail, or they will tell us to send by mail after submitting hope certificate? No, you will send by post. They will actually mention in email or something to you. Definitely they will write to you for the in the email. Then you need to submit your, even if they do not send email and you pass your first and second round, then you need to submit this degree notarized copies to NIIED. BS degree is for 3 years. 3 years degree, no, you cannot apply then. At least 16 years of education is required, like 10 after 12th grade you need to get 4 years education for the bachelor's of science or bachelor of engineering. Maybe you did BTech or something. In Pakistan 3-year degree is BTech, so then you cannot apply, I think, because 16-year education is required for masters. BVOC कर रही हुई लेकिन हमें ट्रांसक्रिप्ट नहीं मिली हमारे डिग्री कॉलेज में. BVOC, थैंक यू सर. बोर्ड से अगर आपका होगा तो फिर तो आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, एट द एंड ऑफ योर डिग्री मिलेगा, राइट? Certificate of bachelor's degree original, so I should submit original. No, not original. Photocopies and then notarized. Like notarized photocopy of your degree is considered as original. If you go to this same file here, I can show you documents. Okay, here for the applicants who are certain that they will not be able to get their academic documents reissued in the future, we strongly recommend them to submit notarized, apostilled, or consular confirmed academic documents in lieu of original documents. Take photocopies of your original degree and then notarize your copies and submit to the university or embassy. सर मैं पूछना चाह रहा हूं कि मैंने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखना है. सर सईद अहमद सर, मैं आपको कह चुका हूं आप अप्लाई कर सकते हैं मेरे भाई. आप इंजीनियर, आपकी फील्ड अगर केमिस्ट्री आपको हर यूनिवर्सिटी में मिल रही है तो देन व्हाट इज द प्रॉब्लम? आप केमिस्ट्री में अप्लाई कर लें, तीनों में. अगर आप समझते हैं कि आप मटेरियल साइंस में कोई अच्छा प्रोफेसर आपको मिल रहा है, किसी प्रोफेसर ने आपको ईमेल रिप्लाई कर दी है, रिकमेंड करने को तैयार है फॉर दिस स्कॉलरशिप, तो आप फिर उस यूनिवर्सिटी के लिए मटेरियल्स डिपार्टमेंट लिख दें. एसओपी आपका एक ही सेम होगा, वो केमिस्ट्री बेस्ड ही होगा. सर मेरा CGPA 3.20 स्केल है में, लेकिन रिक्वायर्ड 3.23. डू आई हैव एनी चांस ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड? यस, go to university or department, ask them for a certificate that you are in top 20% of the students in the class. It is mentioned here in the eligibility criteria. Whenever you are applying for a scholarship, here, like this time I'm guiding you or explaining everything, but whenever you apply for a scholarship, then please do consider reading these guidelines first, because these are most important guidelines. Where it is written, actually there is some, yes, score percentile should be 80% or above on a 100 scale, or be ranked, or mean, yeah. So one of these conditions you must satisfy. So if you can satisfy top 20% within one's class, then you should get a certificate from your head of department or your institute's head that you are in top 20% or top 10% of your class.
तो आपको एक सर्टिफिकेट बनवाना है कि आप टॉप के 15 या 20% या 10% स्टूडेंट्स में हैं अपनी क्लास के। ओके सर, अपना इंस्टाग्राम लिंक बता दीजिएगा। सेम नेम, educational.journey, educational.journey, or if you write educational journey, same logo, same name. सर ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स नहीं मिली है, what should I send them on the place of degree certificate? Then if you have any online certificate और डिग्री की अगर बात कर रही हैं आप, तो डिग्री इस टाइम नहीं ज़रूरत। अगर आपके पास ट्रांसक्रिप्ट है तो आपके पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट होगा और डिग्री कंप्लीशन सर्टिफिकेट आपको डिपार्टमेंट बना के दे देगा, तो वो आप सेंड कर सकती हैं, ठीक है। अगर आपकी डिग्री कंप्लीट हो चुकी है तो पाकिस्तान में डिग्री मोस्टली लेट मिलती है, तो वो आप अपने आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट इन एडवांस मिल जाता है जब आपके रिजल्ट आ जाता है 8th सेमेस्टर का, तो आपको वो जमा करा सकती हैं वो। और जब तक आपकी डिग्री नहीं आती वो डिग्री के तौर पे यूज़ हो सकता है, या फिर डिग्री कंप्लीशन सर्टिफिकेट आप बनवा के सेंड कर दें। सर डॉक्यूमेंट्स को कॉपी करवा कर उसकी 3 जीरोज भेजनी है ना, नथिंग एल्स? नो, डिपेंड करता है आप कहाँ अप्लाई कर रही हैं शाजिया नौरीन। अगर आप अप्लाई कर रही हैं एम्बेसी ट्रैक से तो यस, आपको 3 कॉपीज और एक वो डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, ठीक है, जो आप फिल करेंगी। फॉर्म्स भी इसी तरह, मतलब जो फॉर्म आप फिल करेंगे उसकी 3 कॉपीज और एक वो, 4 हो गई टोटल। आई वांटेड टू आस्क, आई एम अनएबल टू नो कि ईच सेमेस्टर में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ूंगी। ओवरऑल 2 years ऑफ, सॉरी इफ यू आर फीमेल, आई डोंट नो। आपने लिखा है पढ़ूंगी, तो आई एम सॉरी, मैं आपको भाई या साहब कह रहा था, मुझे श्योर नहीं है, सॉरी। ओवरऑल 2 years ऑफ मास्टर में स्टडी प्लान के लिए सर मुझे ईयर वाइज बना है अपना। नो मेरे भाई, स्टडी ईयर वाइज नहीं बनाते, आपको लिखना है हाउ यू विल लाइक एडजस्ट यूर सेल्फ हेयर। आप यहाँ एडजस्ट कैसे होंगे, स्टडी प्लान क्या होगा, आप कैसे कंप्लीट करेंगे, आप क्या सीखना चाहेंगे यहाँ पे, ठीक है, आप यहाँ से क्या हासिल करने के लिए अपना एम लेके आ रहे हैं, स्टडी प्लान ये है। आप प्लान ये नहीं लिखना कि आपने सब्जेक्ट फॉर एग्जांपल बायोकेमिस्ट्री पढ़ना है 3 क्रेडिट आवर का, उसमें से आपने 4/4 लेना है, समथिंग लाइक दिस। आपने प्लान देना है कि आप क्या यहाँ पे कैसे आप रहोगे। लाइक यहाँ पे 24 घंटे लैब अवेलेबल है मास्टर्स और पीएचडी स्टूडेंट को। सुपरवाइजर 24 घंटे नहीं, लेकिन दिन में 9 से 6 अवेलेबल है। देन हाउ यू विल स्टडी एक्चुअली, ठीक है, आप क्या सोर्सेज यूज करोगे। आपका यहाँ पे सिर्फ आप सब्जेक्ट्स पढ़ने नहीं आ रही है, याद रखिएगा, जब आप मास्टर्स में यहाँ पे आ रहे हैं साइंस एंड इंजीनियरिंग में, तो आप यहाँ पे रिसर्च करने आ रहे हैं। सब्जेक्ट तो यहाँ पे पढ़ना सेकेंडरी चीज है, ठीक है। सब्जेक्ट सिर्फ हफ्ते में आपको 3 लेक्चर्स लेने होते हैं, उसके अलावा आप 9 से 6 या 9 से 8 PM लैब में होते हैं और वहाँ पे आपका रिसर्च हो रही होती है। तो आपने जो एसओपी लिखना है वो ज्यादातर रिसर्च बेस्ड लिखना है, मीन कि आप रिसर्च में कैसे काम करोगे। रिसर्च इन्वायरमेंट बड़ा टफ होता है, तो डू यू हैव एनी एक्सपीरियंस, सो और यू हाउ यू वांट टू प्लान योर मास्टर्स एंड योर रिसर्च, ठीक है। इस तरह की चीजें लिखनी है, वहां पे क्वेश्चन दिए हुए हैं, मैं आपको बताया था। सब्जेक्ट्स और इस तरह की चीजें नहीं लिखनी। 3 years BSc and 2 years master can apply for KGSP. Yes, you can apply for the masters then, ठीक है। अब आपकी 17 year एजुकेशन हो गई है, तो आपकी 16+ हो गई है, या 16 हो गई है, देन यू कैन अप्लाई फॉर द मास्टर्स डिग्री। Must hold a bachelor's degree or level of education equivalent to or higher than a bachelor's degree। तो आपके क्रेडिट आवर्स और वो चीजें ज्यादा होंगी, तो आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। Thank you, sir. Welcome. And but sir, in eligibility criteria, they didn't mention about 16 year of education.
Bachelor's degree is 16-year education all over the world. Okay, so it means you are having a bachelor's degree or higher. Higher means 16 or like in case of only OV's question, it is 17 years. So he can apply or he or she can apply to the master's program because his actual years are 17. So it is greater or more than bachelor's degree. So he can apply for the master's program. Sir, undergraduate also have to write their study plan. Naya Chandra. Naya Chandra, this time they are not getting, or the application for the undergraduate are not open at the moment. We are just discussing the master's and PhD scholarship. For the bachelor's or undergraduate program, they will open the applications in September. So I will make the live sessions and the videos and so many things for you as well. So stay tuned and subscribe to our channel, and I will guide you hopefully in the September, early September, and the deadline is mostly in 15th or 16th October. So keep in mind that you need to apply in September. So for the undergraduate, you can apply in September, October. Rifat Batul. अस्सलाम वालेकुम सर। सर, कोरियन एम्बेसी इन पाकिस्तान में जीकेएस स्कॉलरशिप मास्टर पीएचडी अनाउंस हो गई है? लेट मी चेक हुई है या नहीं, because this is interactive session in Pakistan. So I am trying to give you the answer from the files or uh, from the websites, because I want you to know how you can find these details. Mostly it is given in educational part here, training and educational opportunities. So Quakecast, this is another scholarship. I already uploaded some videos for this. Korean is not given yet, but let me check the notice or something. Yes, they announced already on today. They announced this scholarship, so they are a little bit late. I think the deadline will be. Let me check. The deadline is 19th of the March. You can see this one. Yeah, I should zoom in. Yes, here is the guideline book, which is this one, PDF file, and then the application forms in Word, and then the frequently asked questions. And mm, they are not giving you the actually the Excel file. This one, this file you can download from the study in Korea. I already shared in the comment box, so you can actually watch or see this link. Again, I can share with you. So you need to download this. Here is the Excel file. This one also for the universities and the departments. Here is this. तो आई होप रिफत बतूल आपको आंसर मिल गया आपके क्वेश्चन का। आप लिखें कोरियन एम्बेसी इन पाकिस्तान, so overseas.mofa.go.kr/pk-english. So open this link and go to notice, counselor visa service notice, and then you can see the notice here, this one. Click on this one and download the other files. These all files, and carefully read these, and further feel free to contact us. Application deadline. So there are so many things given, so you can read by yourself. So remember, this is a global Korea scholarship and 1 year Korean language, and then masters 2 year. For similarly for the doctoral program, 1 year Korean and 3 years of master doctoral degree. So for the Korean language, they will cover your fees. They will provide you the same stipend as you will get in masters or the PhD degree, and don't worry about the expenses here. It is quite handsome amount that you can live here. So many students come every year and they are enjoying life here. They are
getting the skills. They complete their education. Some of them go back to their countries. They are from the different countries, definitely, or some of them are doing jobs here after this degree. Advantage for the global Korea scholars is that they learn the Korean language for 1 year, and then after graduating or after completing their degrees, they can easily find jobs in industries, in academia, or in so many, like there are different types of industries. So basically, for the jobs here, you need to learn Korean language. It is majorly the requirement most of the time. So if you are interested for the jobs in future in Korea, then you can uh, apply for this scholarship as well, and you will get the benefit. If you have any other question, let me know so that I can answer your questions, Rifat Batul. And if there is anyone else or you want to ask something, you can write your questions here so that I can answer your questions. I'm live here for the Global Korea Scholarship for the Graduate Degree Programs 2021. This is a live session and I'm actually answering your questions. So if you have any question, if you have any confusion about any document or any step in the application process, then you can write your question and I will answer your questions. For PhD, how many years? Total, you will get 4 years. 1 year is Korean language, and 3 years for the degree, doctoral degree or PhD degree. It is mentioned in their given details. Like if even you see this advertisement, it is written here Korean language 1 year plus either 2 year master or 3 years doctoral program or the PhD. Benefits of this scholarship is airfare. They will provide you ticket when you are coming to Korea, and after the degree completion, they will provide you again one ticket to go back to your country if you want to go. Right? If you do not want to go, then it's okay. You can do job here. You can search job. You can apply for the job searching visa, and you can even get the business visa if you want. Settlement allowance, they will provide you some $150 for the settlement when you will reach Korea. Monthly allowance, which is 1 million Korean won, which makes almost $900 per month. This is each month. Research allowance, and this is different for different majors. Like if you are from social sciences and arts, then it is about $200 per semester, and if you are from science and engineering department, then you can get maybe $250 or something. I'm not sure about the exact amount. You can read it here. But yes, you will get some research allowance every semester. Korean language training mean you will get the same benefits that this monthly allowance for Korean language training, and also you will get the fees. So they will actually directly pay the fees. Tuition fee, thesis printing. At the end of your degree, they will give you the thesis printing fees. Medical insurance every month they provide you. Scholarship completion grants. When you will complete this scholarship and you will complete your degree, you will again get some other amount. Korean proficiency grants. This is actually provided to those scholars who get the topic level 5. Actually, topic level 4 is required within 1 year of Korean language training program. If you can get one more level, then you can get almost $100 extra every month. So it all depends on your interest and what you want to do here. Saeed Ahmad. Sir, in personal statement, they say कि write your motivation related to program. So, sir, I wanted to ask you, okay, should I add my motivation related to subject also just related to KGS? भाई मेरे your motivation and is two directional. One is why you want to study in Korea, and then why you want to study this subject, right? For the subject, even you have a statement of purpose. So again, you will write in your statement of purpose, but majorly you should write this personal statement for your motivation for KGSP, Korea, this university, and this program.
right? Program you can mention just a name or something, but for the Korea and that university you need to write this personal statement, answer this. सर जी डेडलाइन डेट दोबारा बता दें। एम्बेसी की है 19 मार्च। 22 फरवरी से उन्होंने एप्लीकेशन आज से स्टार्ट की है और 19 मार्च फ्राइडे 19 मार्च। 19 मार्च का मतलब है कि आप एटलीस्ट अगर आप टीसीएस के थ्रू भी डॉक्यूमेंट्स भेज रहे हैं तो आपको हर सूरत में 15 मार्च को डॉक्यूमेंट भेज देने चाहिए। इससे लेट ना करें फिर डिले हो जाएगा, राइट? 15 या 16, इससे लेट अगर डॉक्यूमेंट भेजेंगे तो वो मिसप्लेस हो सकते हैं। सो यू हैव 15 and 7 22-23 days to deadline. I'm asking, I have completed master degree, so I Kgsb. Yes, you can apply for the PhD degree. Yes, you can apply for the PhD degree. Your degree will be 1 year Korean language and 3 year doctoral program, and you will get all these benefits. I think you can read here, right? Now you can read. Shape your future through study in Korea. Korean language program, master's 2 year, doctoral 3 years, and airfare benefits, settlement allowance, monthly allowance, research allowance, Korean language training, tuition fees, thesis printing fee at the end of your degree, medical insurance every month, scholarship completion grant at the end of your degree, Korean proficiency grant if you get one extra level in your Korean training program. So the monthly allowance is almost $900 per month. Every month you get $900 in your account, and you can spend these wherever you want to. You want to chill, you can spend. You want to just eat food and live, then you can spend. So this $900 or 1 million Korean won is more than enough for a person. You can get an one room with a kitchen and other facilities, and you can uh, eat good food within this 1 million, and even you can enjoy some party sharties at the end of your like semester or every weekend. So it is more than enough. सर जी मैं फोर्थ सेमेस्टर में हूँ, एमएससी मैथमेटिक्स कर रही हूँ। आई गॉट 3.96 आउट ऑफ 4। तो क्या मैं पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकती हूँ? एमएससी मैथमेटिक्स आफ्टर 4 year बैचलर्स और 2 years बैचलर्स? लेट मी नो, 2 year बीएससी और 4 year बीएस? Thank you so much, sir, to clear my doubt. And I am girl from India. Okay, sorry if I misunderstood your gender. So sorry for that. And best wishes for your application and the scholarship application. Uh, so you can try at least. रिफत बतूल आप लिखते हैं काइंडली के 2 साल का बीएस था या 4 साल का बीएस। अगर आपका 2 साल का बीएस था और 2 साल का एमएस है या एमएससी है तो आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है? अगर आपने ये जो 2 साल का एमएस है आपने 4 साल के बैचलर्स के बाद की है, 4 years बीएस प्रोग्राम के बाद की है, देन यू कैन अप्लाई टू दी पीएचडी। तो आपका 2 साल का है बैचलर्स, राइट? तो आप अब मास्टर्स के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है? तो आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर सकती हैं because this MSc and 2 years bachelor's BSc is equal to bachelor's in science of 4 year, total 16 year education. तो 16 year education पे आप मास्टर्स के लिए आप अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है? आई होप कि अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो yes, if you have any other question you can write 2 year bachelor's, 2 year master's. Yes, then you can apply for the master's program here because internationally 4 years bachelor program, then 2 years master's, and then 3 years PhD. This is the rule. But in Pakistan we have 2 years BSc with different subjects and then 2 years master's within one subject. तो उसके ये 16 साल हो गए आपके, 16 year हो गया एफएससी के बाद 4 साल। तो अब आप एमएससी के लिए, यहाँ पे एमएससी नहीं, एमएस के लिए, मास्टर्स के लिए अप्लाई कर सकती हैं मैथमेटिक्स में। यस,
तो आप जो स्टूडेंट्स मुझे सुन रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप मास्टर्स या पीएचडी किसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप एक सीवी अपनी बनाइए जल्दी से। मेरे चैनल पे सबसे पहली वीडियो जो मैंने अपलोड की थी 1 साल पहले, वो सीवी बनाने के लिए है, मास्टर्स और पीएचडी के लिए, ठीक है। वो बनाइए सीवी अच्छी सी, और मेरी ये 2 वीडियोस हैं जिसमें ईमेल लिखने का तरीका मैंने बताया, ठीक है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर ये तरीका आप करेंगे तो आपके चांसेस बहुत ज्यादा होंगे, ठीक है। आप सीवी बनाइए, सीवी के साथ ईमेल लिखिए एक अपने मतलब रिलेटेड सब्जेक्ट के रिलेटेड। वो सैंपल भी मैंने एक वीडियो में शेयर किया, दूसरी वीडियो में मैंने गाइडलाइंस दी हैं, वो बहुत शॉर्ट सी वीडियो है 5-5 मिनट की, वो देख लीजिए। और उसके बाद आप जिस भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल रिफत बतूल यू आर फ्रॉम मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट, तो मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट ओपन कीजिए, वहाँ के प्रोफेसर 3 से 4 एक प्रोफेसर को ईमेल कीजिए। सीसी नहीं करनी, हर एक को सेपरेट ईमेल करनी है, ठीक है। आप उनको लिखें सब्जेक्ट में कि यू वांट टू अप्लाई फॉर द जीकेएस और ग्लोबल कोरियर स्कॉलरशिप एंड यू आर लुकिंग फॉर द सुपरविजन, कैन यू मतलब आपने लिखना है कि आप सुपरवाइजर देख रही हैं फॉर ग्लोबल कोरियर स्कॉलरशिप दिस ईयर, ठीक है। पेज में आप लिखेंगे मैं कौन हूँ, मैंने मास्टर्स किया है या बैचलर्स किया है, 16 ईयर एजुकेशन, मेरे ये ग्रेड्स हैं, मैंने ये सब्जेक्ट पढ़े हैं, एंड देन आई वांट टू ज्वाइन योर रिसर्च ग्रुप और आई वांट टू वर्क अंडर योर सुपरविजन फॉर द मास्टर्स अंडर द ग्लोबल कोरियर स्कॉलरशिप जीकेएस 2021। अगर आपको वो रिप्लाई कर देते हैं, वो कह देते हैं कि जब मेरे पास या मेरे डिपार्टमेंट के पास आपकी एप्लीकेशन आएगी तो आई विल डेफिनेटली रिकमेंड, so then your chances are much more, and you can like get this scholarship very easily। अगर आपने एडवांस में किसी प्रोफेसर को अप्लाई नहीं किया, फिर आपकी लक ही है कि आपके चांसेस बढ़ जाएं। लक का मतलब ये है कि जैसे ही फॉर एग्जांपल एम्बेसी वाले भेजते हैं डॉक्यूमेंट टू यूनिवर्सिटीज, तो यूनिवर्सिटी क्या करती है, हर डिपार्टमेंट के जो कैंडिडेट्स होते हैं उनकी लिस्ट या उनके डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो डिपार्टमेंट को भेजते हैं। फिर डिपार्टमेंट के जो प्रोफेसर होते हैं वो मिल बैठ के, कमेटी होती है, बैठते हैं, फिर वो डिसाइड करते हैं कि कौन से स्टूडेंट को उन्होंने रिकमेंड करना है फॉर स्कॉलरशिप। अब वो उसी को रिकमेंड ज्यादा करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल एक डिपार्टमेंट 5 स्कॉलर्स को रिकमेंड करने जा रहा है और 4 के पास रिकमेंडेशन है और बाकी 6 के पास नहीं है, अब 4 वो तकरीबन डन हो जाएंगे कि इन्होंने हमसे राब्ता किया था, हमें कहा था कि हमें सुपरवाइज करें एमएस में, तो इनको तो करो डन। एक सीट बच गई, वो सीट होगी उन 6 में से किसी एक के हिस्से में। अब वो उन 6 में से कौन सिलेक्ट होगा, वो जो बहुत हाई प्रोफाइल का होगा बंदा वो सिलेक्ट होगा। तो इन एडवांस अगर आप किसी भी प्रोफेसर से रिस्पांस ले लेते हैं पॉजिटिव के ही एग्रीज टू सुपरवाइज यू फॉर मास्टर्स और पीएचडी में की तो लाजमी है, वहां तो रिकमेंडेशन के बगैर, प्रोफेसर के पॉजिटिव रिप्लाई के बगैर बहुत मुश्किल है। लेकिन एमएस के लिए भी आपके चांसेस तभी बढ़ेंगे जब आप प्रोफेसर से पॉजिटिव रिप्लाई ले लेंगे, ठीक है। तो फिर आप उसको बताएंगे जब आप एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे कि मैंने सर एप्लीकेशन सबमिट कर दी है, नो प्लीज रिकमेंड मी व्हेन यू गेट द माय एप्लीकेशन और द डिपार्टमेंट गेट्स दिस एप्लीकेशन लिस्ट और समथिंग, देन आपके चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो तरीकाकार कोरिया में इस तरह है, दूसरे स्कॉलरशिप में भी इसी तरह है। दूसरे स्कॉलरशिप में तो इससे भी कहीं ज्यादा प्रोफेसर ही तकरीबन एडमिशन कंफर्म करता है। अगर प्रोफेसर ने यस कर दिया और आपके डॉक्यूमेंट सही हैं तो यू आर इनटू यूनिवर्सिटी। तो ये तरीकाकार है कोरिया के लिए। आपका कोई और क्वेश्चन हो किसी भाई बहन का तो यू कैन आस्क। आई एम वेटिंग फॉर यू next 5 to 10 minutes, maybe 5 minutes, and if you do not have any question I will sign off after 5 minutes। सर जी अगर हम एम्बेसी के थ्रू अप्लाई करें रहे हैं तो क्या हम तब भी प्रोफेसर से रिस्पॉन्ड ले सकते हैं? यस एवरीवन, यही रिकमेंड करूंगा मैं कि आप किसी भी प्रोफेसर से, आप और लोगों को, प्रोफेसर्स को ईमेल लिखें। मैंने ये सीवी बनाने का तरीका भी अपलोड किया हुआ है, सबसे पहली मेरी वीडियो, और मैंने 2 वीडियोस बनाई हैं, हाउ टू राइट एन ईमेल टू प्रोफेसर एंड द ईमेल सैंपल, तो उसको फॉलो करें। अगर आपका जीके स्कॉलरशिप हो जाए तो माशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। रिफत बतूल, गुड लक टू एवरीवन who is online here or asking question to us, and hope for the best। Make sure your documents are complete। List is given, if you want I can show you the list of documents again। So list of documents is given here
Form number one is your application form, then personal statement, form number two. Then form number three is statement of purpose. These three are required for the master and doctoral, and this is not required for the master's PhD. And two letters of recommendation for master's and PhD. This is not required. Form number seven. This is just an agreement I explained in my previous lecture or live session. You just need to tick and sign and mention your name and date. And personal medical assessment, very simple. Just you can write yes or no or tick mark. Certificate of bachelor's degree or bachelor's diploma, original. Original mean notarized copy. ओरिजिनल डू नॉट सेंड ओरिजिनल, कभी भी ओरिजिनल आपने सेंड नहीं करना, बिकॉज वापस नहीं मिलेगा आपको, और पाकिस्तान या इंडिया में बहुत मुश्किल है कि फिर आपको ये ओरिजिनल री इशू कर दें यूनिवर्सिटी वाले। तो आपने क्या करना है, इस डिग्री या डिप्लोमा की आपने करनी है कॉपी और उसको नोटराइज करवाना है। कोर्ट्स के नज़दीक नज़दीक होते हैं ये नोटरी पब्लिक ऑफिस, ये मोस्टली जो वकील होते हैं, लॉयर्स होते हैं, उनके पास ये अथॉरिटी होती है कि वो नोटराइज करके दें आपको। तो नोटरी पब्लिक का ऑफिस होता है। बैचलर्स डिग्री ट्रांसक्रिप्ट या रिजल्ट कार्ड जिसे कहते हैं, उसको भी इसी तरह फोटोकॉपी लें और उसको नोटराइज करा लें। जो रिक्वायर्ड हैं दोनों मास्टर्स पीएचडी के लिए, ठीक है। मास्टर्स डिग्री डेफिनेटली एंड ट्रांसक्रिप्ट इज रिक्वायर्ड फॉर द डॉक्टरल प्रोग्राम। Then certificate, proof of citizenship document. Either it is ID card or your passport. So it is required for both. And your parents' proof of citizenship document. Their ID card, if it is in English, otherwise you need to send family registration certificate. You can also send, which is issued by Nadra in Pakistan. So I don't know about India. Or you can send their passport, copy of passport. And these are optional. If you have any English proficiency certificate like IELTS and something, definitely send it to the authority or the university or embassy. If you have any research paper or you have any award achievements or certificate, then definitely send it to the university. And the passport is not required at the moment. If you have, you can send, otherwise leave it. And then after the completion of second round of successful candidates, like after the interviews, they will ask you for proper medical examination, which is done by some doctor and some authorized labs in Pakistan and India. सर जी आप पर्सनल स्टेटमेंट रिवाइज करते हैं, ठीक है भाई, पर्सनल स्टेटमेंट हम आपको रिवाइज कर देते हैं। पर्सनल स्टेटमेंट मोटिवेशन विद विच यू अप्लाई फॉर दिस प्रोग्राम, देखिए लिखा हुआ है प्रोग्राम, ठीक है। अब आपने मोटिवेशन लिखनी है कि सर मैं कोरिया जो है वो इस टाइम नंबर 1 है इनोवेटिव कैटेगरी में, ठीक है। अभी एक रिपोर्ट आई है इंटरनेशनली एंड इट वाज हाईलाइटेड इन वेरी बिग स्केल, लाइक कोरिया ने जर्मनी, यूएस और बाकी जितने कंट्रीज हैं एडवांस्ड, उनको पीछे छोड़ दिया है इन इनोवेशन, ठीक है। तो इनोवेटिव कंट्री है, इसमें रिसर्च पेपर्स भी बहुत ज्यादा आते हैं। तो आपने एक कहानी सी बनानी है, स्टोरी बनानी है मोटिवेशन के लिए कि आप क्यों जीएसपी अप्लाई कर रहे हैं, कोरिया में क्यों अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि ये एक बहुत एडवांस कंट्री है, रिसर्च पे फोकस्ड है, रिसर्च में नंबर 1 है वर्ल्ड में, इसकी यूनिवर्सिटीज का माहौल बहुत अच्छा है, एजुकेशन बहुत अच्छी है, एंड सो मेनी थिंग्स, ठीक है। You want to get the skills and you want to get the exposure, then you want to be the global Korea citizen. You're interested for this scholarship, it will provide you so many options to study, and do not worry about the funding or something, right? After this motivation, you can write a line like you are interested to get the master's degree in chemistry or chemical engineering or material engineering from this university, whatever is your intended university or institute. Family and education background, you are from like for example from a very far away area in Pakistan, and you traveled to like Islamabad for your uh, mm, undergraduate degree or for your intermediate education, and you struggle something, you sacrifice something, right? 2 to 3 lines. Then significant experiences you have had, like if you have taken any risk, like you traveled away from the home and living alone, and just for your future and to get the education, something achievements you have, you can write. If you have any event in your life which had some really significant influence on you,
तो आपको अगर कोई ऐसा वाक्य याद हो आपके रिलेटेड जो इसकी वजह से आपने एजुकेशन हायर एजुकेशन की तरफ you are interested for the higher education, then you can mention that event in 2 to 3 lines, not more than that. And make sure this all personal statement is within one page and single spaced, and Times New Roman is the font and the size is 11 points, right? Extracurricular activities, if you do not have, don't write it here. Or if you want to mention, you can mention just within one line, like you are a good sportsman, or you are an athlete, or you always you have been the key player for your college team in football or cricket or hockey or something. If you have any community services, you are providing some free tuition to the students, intermediate students in your village or something. And if you have any awards and publications, then you can write, and you have some skills, like you already know MATLAB and you are proficient in Python or something, right? So these are the skills you want to mention. So this is your personal statement, but keep it very short, to the point, and within one page, single spaced, Times New Roman, and size is 11. And then statement of purpose is totally related to your Korean language. Before coming to Korea, you should mention some websites and YouTube channels that you are learning from these channels, and you want to be uh, like you want to know the basics about the Korean languages, alphabets and something before coming to Korea. And then you can write that after coming to Korea, you will plan your studies, you will read the newspapers, or you will watch dramas or movies or something, and then you will join the institute, which is actually assigned by the authority to learn the Korean language for first year. And then you will interact with the different students, Korean students at the institute or the university, and this will help you to learn the Korean language. And then goal of study and detailed study plan. Study plan mean that how you will plan your subjects, and then how will you plan your research, and how many hours you want to spend in a lab, and what you want to achieve in your research, and what will be your research area, like in within chemistry, if you are interested for the nanoparticles or something, or nanotechnology, you want to work related to this, then you can mention it here, right? So future plan in Korea. After completing degree, if you are interested for a job here, or you want to continue your studies, then you can write. Or you want to do business, you can write. Or you want to get some more skills and something. And another country after study. So after completing your education, you want to go back to Pakistan or to your country, and then you want to contribute this, and you want to share the skills and the others learning from your experience in Korea, and you want to transfer the knowledge to the students or to the industries which you already got from the Korea, and during the masters or the PhD degree. So this is all about your uh, statement of purpose, and it should be within 2 pages. Do not write it less than 1.5 page, and do not exceed the limit of 2 pages. This is not required research proposal, so ignore it. सर जी मास्टर वाली बात समझ नहीं आई, हम क्यों पीएचडी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते? आपकी टोटल एजुकेशन अभी होगी 14 ईयर्स, सॉरी 16 ईयर, 16 ईयर। आपने एफएससी की 12 साल, फिर 2 साल का बीएस किया 14 साल, फिर 2 साल की आपने एमएससी की है अभी, तो आपके ये 16 साल हो गए। तो इंटरनेशनली जो बीएससी होता है या बीएस होता है इन इंजीनियरिंग और साइंस, वो होता है 16 साल एजुकेशन के इक्वल। तो आप मास्टर्स जो इंटरनेशनली होता है वो आप 16 ईयर एजुकेशन के बाद अप्लाई कर सकते हैं। तो जब आप मास्टर्स कर लेते हैं तो आपकी एजुकेशन हो जाती है 18 ईयर, देन यू आर एलिजिबल फॉर द पीएचडी, राइट? सम कंट्रीज में ऐसा होता है कि 16 ईयर एजुकेशन के बाद आप डायरेक्ट पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वहां पे पीएचडी फिर 5 से 6 साल में होती है। ठीक है, वो उनमें से यूएस भी है और कुछ डिफरेंट कंट्रीज और भी हैं, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है, बहुत टफ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो उसमें अप्लाई करने के लिए आपके पास सही तरह से स्किल्स होने चाहिए, लाइक बहुत टफ कंपटीशन होता है, तो बहुत मेहनत है उसके अंदर। Sir, you have really helped out really well. Thank you so much. You are welcome, Saeed Ahmed, uh, and best wishes for your application process.
रिफत बतूल, आपको पहले एमएस करना पड़ेगा। यस, एमएस के बाद पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यस, राइट, सही, थैंक यू। ओके जी सर, क्या प्रोफेसर से कांटेक्ट करके उनसे रिस्पांस लेने का लिए मेथड है? यस, उनसे मेथड यही है कि मैंने जो ईमेल लिखी है, हाउ टू स्टार्ट द स्कॉलरशिप प्रोसेस वीडियो, उसके अंदर ये है कि आप ईमेल लिखें और अपनी सीवी अटैच कीजिए और सब्जेक्ट में लिखें कि आप ग्लोबल कोरियर स्कॉलरशिप के एप्लीकेशन जमा कराना चाहते हैं एंड यू वांट हिम और हर, जो भी प्रोफेसर है, टू बी योर सुपरवाइजर फॉर मास्टर्स और पीएचडी, जो भी आपका है। आप उनको ईमेल कीजिए विद योर सीवी। सो सीवी बनाने का तरीका भी मैंने बताया हुआ है। सीवी कोरिया में जिस तरह की प्रोफेसर लाइक करते हैं वो मैंने एग्जैक्टली वहां पे बना के दिखाई है। सारे स्टेप सब कुछ मैंने कंप्लीट उस डिटेल दी है, तो वो अगर फॉलो करते हैं तो होपफुली कि आपको पॉजिटिव रिस्पांस मिल जाएगा। Sir, are there any full scholarship to international student to study human medicine or dentist in any Korean university if I don't know Korean language until they give me the first language year? मेडिसन जो है इसके अंदर कोरिया में स्कॉलरशिप नहीं है। डेंटिस्ट इसके अंदर यस पॉसिबल है, और यहाँ पे कुछ यूनिवर्सिटीज की लिस्ट गिवन है, तो इनके अंदर आप देखें। अभी मैंने एक यूनिवर्सिटी कुछ देर पहले ओपन की थी, अभी मुझे नाम याद नहीं है, लेकिन उसके अंदर उन्होंने ये देखें, जैसे नर्सिंग वगैरह का इन्होंने लिखा हुआ है ना, मास्टर्स पीएचडी के लिए, तो आपको वहां से मिल जाएगा। तो उसके लिए आपको कोरियन लैंग्वेज, लेकिन ये जी ग्लोबल कोरियन स्कॉलरशिप के थ्रू ही हो सकता है। अदरवाइज क्योंकि यहाँ पे हॉस्पिटल्स में और लाइक जनरल पब्लिक जो है वो सिर्फ कोरियन बोलती है, कोरियन समझती है, तो इसलिए यहाँ पे इंग्लिश में कोई सिस्टम नहीं है, कोई स्टडी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप मेडिसिन से रिलेटेड मास्टर्स या पीएचडी करना चाहते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आपको सिर्फ जो है वो कोरियन लैंग्वेज में ही मिलेगा। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज हैं, या आप फार्मास्यूटिकल साइंसेज या फार्मेसी में आप जाएं तो फिर आपको इस तरह मेडिसिन, ये देखिए मेडिसिन, लेकिन ये वही है कि ग्लोबल कोरियर स्कॉलरशिप के अंडर है, जिसमें आपको 1 ईयर लैंग्वेज लाजमी है सीखना। ठीक है, इसके अलावा इन इस जैसे ये यूनिवर्सिटी है सोल नेशनल यूनिवर्सिटी, तो इसका आप ये डिपार्टमेंट देख सकते हैं, ये 2 3 4 डिपार्टमेंट्स हैं। ठीक है, तो ये डिपार्टमेंट्स अगर वहाँ के प्रोफेसर को आप ईमेल लिखें, मैंने तरीका बता दिया है, आपने सीवी अटैच करनी है ईमेल के साथ, और उनसे पूछें कि क्या उनके पास कोई स्कॉलरशिप है जिसके थ्रू आपको वो फंड कर सकें। नॉट लाइक ग्लोबल कोरियर स्कॉलरशिप मेंशन भी ना करें और उसको कुछ भी इसके बारे में ना कहें, लेकिन आप उसको लिखें कि यू आर इंटरेस्टेड फॉर द मास्टर्स और पीएचडी, जो भी आपकी इंटेंशन है। तो क्या वो आपको कोई रिस्पॉन्स देते हैं तो फिर आगे बात चलेगी, तो देन यू कैन आस्क मी और आई कैन सजेस्ट यू आंसर टू हिज ईमेल। रिफत, पाकिस्तान में बीएस करते हैं और अगर बीएससी करो तो एमएससी करनी पड़ती है, बीएस और एमएस सेम लेवल। ठीक है जी मैरी विंसेंट, सही, तो आप क्या मुझे एमएस के लिए अप्लाई करना चाहिए? यस, आपको एमएस के लिए ही अप्लाई करना चाहिए। यस, कोरियन कोर्स विच इज कॉल्ड टॉपिक, ये टॉपिक PIK है। ठीक है, TOPIK फॉर कोरियन इज नेसेसरी। यस, आपको एमएस करना होगा। नहीं, एमएससी कंप्लीट नहीं हुई है, जुलाई तक कंप्लीट होगी, आप अप्लाई कर सकते हैं। आप होप सर्टिफिकेट बनवाएं, डिग्री कंप्लीशन सर्टिफिकेट बनवाएं। यहाँ पे मैंने आपको पहले दिखाया है कि यहाँ पे लिखा हुआ है, जब आप डॉक्यूमेंट्स में जाते हैं ना, तो मैं अगेन आपको यहाँ पे बता देता हूँ, एक मिनट जस्ट। ठीक है, एक्चुअली में मसला ये होता है कि यहाँ पे जब हम applicants for their bachelor's and master degree who are expected to graduate by August 31st, 2021 can also apply for the program. Applicants who are expected to graduate at the time of application must first submit a certificate of expected graduation. Expected graduation का सर्टिफिकेट आपको यूनिवर्सिटी या कॉलेज से मिल जाएगा, इंस्टीट्यूट से मिल जाएगा, हेड ऑफ डिपार्टमेंट से कहें, वो अपनी स्टैंप लगा देंगे, आप ये जमा कराएं और अप्लाई कर दें। सर प्लीज वन लास्ट क्वेश्चन, सईद अहमद, आपके क्वेश्चंस वेलकम, आप करते रहें क्वेश्चन, मैं आंसर के लिए ही बैठा हूँ। इफ आई गिव जस्ट इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट फ्रॉम माय इंस्टीट्यूट नॉट ऑफ नहीं, अगर उन्होंने आइल्स आपसे मांगा हुआ है देन नो, यू आर नॉट एलिजिबल। अगर उन्होंने आइल्स मांगा हुआ है
फिर आपको IELTS ही देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे कोई खास आई डोंट थिंक इतना IELTS यहाँ पे मांगा हुआ है। किसी के सामने होगा तो होगा, अदरवाइज मोस्टली they are not asking for the IELTS because their purpose is to try give you chance to study and understand the Korean language and Korean culture. They are investing on you to give you 1 year Korean language training. It's not necessary. You can apply without IELTS. Thank you, Mary Vincent, for answering these questions. So nice of you. Say them, and when you get scholarship in Korea, you have to complete 1 year. Again, thank you so much. And then I think you would not be able to apply because you have to submit your document till March. No, she can apply if you she can get the degree before, or at least the final results and transcript before 31st August 2021, then she can apply. This is the statement written here, so everyone should consider this statement if he or she is expected to graduate in August 2021. So this is very major, very special statement for degree requirements for the masters and the PhD. So you can apply. Uh, if you have any questions, Said Ahmed, go ahead. I am waiting for the questions. So I should again move to the slide that Global Korea Scholarship GKS 2021 graduate degree program. This is a live session and I'm answering your questions. Feel free to ask your questions and I will answer. सर जी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और स्टडी प्लान पर भी एक वीडियो बना दें, इससे ही अच्छी वीडियो. रिफत बतूल, आई थिंक यू मिस्ड द चांस टू अटेंड द लाइव सेशन फॉर दिस पर्पस स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एंड स्टडी प्लान. तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकती हैं, उसके अंदर मैंने अगेन डिटेल तकरीबन 1 घंटे की ये वीडियो थी जिसमें मैंने कुछ एंड पे क्वेश्चन आंसर भी लिए थे, तो वो आप देख लीजिए. अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है, उसमें मैंने तकरीबन सारे पॉइंट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो स्लाइड्स की शक्ल में, देन डॉक्यूमेंट्स की शक्ल में, वो सब कुछ मैंने कवर किया है. तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि 1 आवर इन्वेस्ट कीजिए और अपने फ्यूचर के लिए और अपने एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए. तो वो देखें और इंशाल्लाह आपको उसमें तकरीबन सारी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, टिप्स थे, या जो भी मैं समझता था कि आपको मेंशन करना चाहिए, मैंने वहाँ पे तकरीबन डिटेल डिस्कशन की है एंड क्वेश्चन आंसर भी थे. तो वहाँ से उन क्वेश्चन आंसर से भी आपको काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि अभी इस टाइम पे तो क्योंकि ऑलरेडी इट्स 12:27 AM हेयर, तो सोना भी है. इस वीडियो में तो मैं नहीं कवर कर सकता स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एंड स्टडी प्लान को अगेन. वेरी सॉरी एट द मोमेंट, बट यू कैन वॉच माय प्रीवियस वीडियो. तो उसके अंदर आपको सब कुछ ये मिल जाएगा. अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन हो तो मैं नेक्स्ट सेशन में ये कवर कर दूंगा. तो यूजुअली व्हेनेवर आई वांट टू डू लाइव सेशन आई डू इट at the same time, like it is 6 p.m. in Pakistan, 6:30 in India, and otherwise you can calculate. तो इन कंट्रीज में, पाकिस्तान में जब 6 से 7 के दरमियान मोस्टली आई कैन डू लाइव सेशंस. सो सर, व्हाट इफ आई हैव नो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी इवन फ्रॉम माय इंस्टीट्यूट, स्टिल डू आई हैव चांस? अगर आइट्स उन्होंने कहा हुआ है तो फिर आप वहां पे नहीं अप्लाई कर सकते, उस डिपार्टमेंट में और डिपार्टमेंट में अप्लाई करें, ठीक है. लेकिन यहाँ पे जीकेएस ग्लोबल कोरियर स्कॉलरशिप के अंदर मैंने नहीं देखा कि किसी ने आइट्स मांगा. अगर आपके पास कोई एग्जांपल है किसी यूनिवर्सिटी के किसी प्रोग्राम में इधर लिखा हुआ है, देन यू कैन आस्क मी, ठीक है. तो मैं आपको फिर प्रॉपर आंसर करूंगा, मतलब कि क्या आपको चाहिए वहां पे, कोई डॉक्यूमेंट यहाँ पे एक्स्ट्रा उन्होंने रिमार्क्स में लिखा हुआ है. तो मैं यहाँ पे देख चुका हूँ काफी यूनिवर्सिटीज, तो मुझे कोई एज सच नहीं नजर आया जिसने आइट्स मांगा हो, क्योंकि ग्लोबल कोरियर स्कॉलरशिप का मतलब ये है कि वो आपको कोरियन सिखाना चाहते हैं, कोरियन कल्चर दिखाना चाहते हैं. दे वांट टू एक्चुअली इन्वेस्ट टू शो द वर्ल्ड देयर लैंग्वेज, देयर कल्चर, एंड दैट्स व्हाई दे आर ऑफरिंग दिस स्कॉलरशिप. और इतनी ज्यादा अमाउंट भी वो आप पे खर्च कर रहे हैं, तो ये सारा इसलिए कर रहे हैं कि आपको कोरियन कल्चर और कोरियन
कोरिया के बारे में इंफॉर्मेशन देने चाह रहे हैं। यस सर, सोल नेशनल काइस्ट। तो सोल नेशनल यूनिवर्सिटी, तो ये देखिए मैंने ओपन की हुई है मेरे भाई। अभी ये कहाँ पे, इन्होंने तो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। अगर आप के पास कोई फाइल है और आप कहते हैं कि उसके अंदर लिखा हुआ है, तो वहां बताएं मुझे। ये जो लिखे हुए हैं इंग्लिश 24%, 25%, इट मीन के ये जो लेक्चर्स हैं वो इंग्लिश में होंगे 25%। मतलब 4 कोर्स हैं आप पढ़ रहे हैं एमएस के दौरान या पीएचडी के दौरान, तो उसमें 25% इंग्लिश के चांसेस हैं कि वो इंग्लिश में ऑफर होंगे, ठीक है, रशियन में होंगे। इसी तरह अगर मैं ये 50% इंग्लिश, तो एशियन लैंग्वेजेस एंड सिविलाइजेशन ये 50% इंग्लिश में होगा। तो इसमें क्या ये मतलब नहीं है कि आपको इंग्लिश रिक्वायर्ड है, कोई आइल्स रिक्वायर्ड है। ऑलमोस्ट ऑल लेक्चर्स इन कोरियन, ठीक है। इसी तरह ये देखिए यहाँ पे, अब मुझे तो आइल्स नजर नहीं आ रहा कि सईद अहमद, अगर आपको कहीं पे रिफत बतूल, यस इंशाल्लाह हम दुआ कर सकते हैं। बाकी मेहनत आप कीजिए और हम गाइड कर सकते हैं और दुआ कर सकते हैं आपके लिए। तो सईद अहमद, आप ये देखें ना, यहाँ पे ये कहीं पे नहीं लिखा हुआ कि आपको आइल्स चाहिए, ठीक है। अब काइस्ट के लिए मुझे पीछे जाना होगा, यहाँ पे होगा कि काइस्ट कोरिया टेक, काइस्ट कहाँ गया, ये है काइस्ट जी। तो काइस्ट के अंदर अब मैं अगर देखता हूँ, तो यहाँ पे मुझे तो नहीं नजर आ रहा कि कहीं पे उन्होंने आइल्स लिखा हो। जी जी, वो अगर है तो आप मुझे यूनिवर्सिटी मेंशन करें, देन आई कैन डू द नेक्स्ट सेशन फॉर दिस, ठीक है। आप लिख दें यूनिवर्सिटीज, बाद में इस वीडियो के एंड होने के बाद कमेंट में लिख देना, ताकि मैं वो कमेंट देख लूं उस यूनिवर्सिटी के बारे में। फिर मैं वो फाइल डाउनलोड करके फिर आपको सारा वो फाइल से एक्सप्लेन कर दूंगा, कल कर दूंगा, ठीक है। तो वो आप मुझे यूनिवर्सिटीज के नाम मेंशन कर दें, देन आई कैन रीड एंड देन आई कैन आंसर यू। विदाउट प्रूफ आई कैन नॉट एक्सप्लेन एनीथिंग। तो मैं कंफ्यूजन नहीं पैदा करना चाहता बाकी स्टूडेंट्स के लिए, इसलिए बिकॉज यहाँ पे कुछ नहीं मेंशन। अगर आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट किसी की स्पेसिफिक देख रहे हैं और वहां पे कोई किसी डिपार्टमेंट के लिए आइल्स मांगा हुआ है, तो वहां ठीक है, आप कह सकते हैं। हाँ, उनका ये देखिएगा कि आप उनके जनरल स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने की फाइल तो नहीं ओपन करके बैठे। ग्लोबल कोरियर स्कॉलरशिप की अनाउंसमेंट अलग से होती है। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ स्कॉलरशिप, थ्री टाइप्स ऑफ स्कॉलरशिप, ठीक है। तो इफ यू आर लाइक looking into a wrong PDF file or guidelines, then it is a confusion, just a confusion. So please download the Global Korea Scholarship Program from KAIST website. There are some details about other scholarships. So definitely they will ask you for IELTS for the other scholarships, not for the Global Korea Scholarship, I think. So I will check this KAIST and Seoul National University and their Global Korea Scholarship guidelines, and then I will do the session next time, maybe tomorrow. If you people have any other questions after this session, you can write and I can uh, 80% should we submit an just a one document, just a one page from your department that you are within top 10 or top 20. If they can write top 10, it is better, or if they can write top 20, it is okay also. Top 20% in your class. Sir, can we apply to both KGSP scholarship and GKS scholarship at the same time? He who must not be named, okay, you do not want to be named. So KGSP scholarship is the old name of Global Korea Scholarship. Try to understand, this is the same thing. Some people call it KGSP scholarship, but the recent updated name or the new name for this scholarship is Global Korea Scholarship Program for graduate degrees, okay, 2021. So this is a new name for this scholarship, but there is no difference. So you can call it Global Korea Scholarship or Global Korean Government Scholarship Program, KGSP, Korean Government Scholarship Program. Okay. Yes, Mary Vincent is very active, very nice, and I don't know he or she is answering. So सर जी, नोटराइज डॉक्यूमेंट कैसे करते हैं वो भी बता दें।
नोटराइज के लिए आपको नोटरी पब्लिक ऑफिसर या ऑफिस में जाना होगा। मोस्टली ये कचहरीज और इसके आसपास कचहरीज के करीब करीब होता है। वहां से आप किसी बड़ी सिटी में रहते हैं तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि ये ऑफिस कहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो नोटराइज करा लीजिए वहां से। कोर्ट्स कचहरी जिसे कहते हैं। सर, ओ नो ब्रो। ओके सर, यस। Can you suggest how to start personal statement to get nice impression? Can you give some tips? Personal statement, they ask a straightforward question: what is your motivation? Right? You can start with a quote from any famous leader for the motivation. Search in Google. It can give you a like good impression. You can give a good impression with the starting line. So you can write one liner quote from any leader in the history, or like we see motivational quotes. So you can write about the hard work, or you can write about the struggle and something. So that will be a good idea. So you can start your motivation or personal statement with a one liner quote from any famous leader or someone. If you have any question, please write. I'm live here to answer your questions for the Global Korea Scholarship Program, GKS 2021 Graduate Degree Program. And this is a live session. I'm answering to your questions. Or if you want to ask about the other scholarships in South Korea, even you can write. So I will answer your questions. For the other scholarships, soon I will do some more live sessions, and I will upload some videos, because there are lots of university scholarships as well. And most of the people in Pakistan and India and like the countries like Bangladesh, Sri Lanka, and Nepal, or these people do not know about these scholarships, because these are not announced in different websites. But you can apply and you can get handsome amount. Even sometimes you get more amount than this Global Korea Scholarship. And even also you do not need to study Korean language for 1 year. So after selection on for those scholarships, you directly move to the your supervisor and you start your master's or PhD. Sir, I have downloaded the file university information where it is all written from Study Korea website. Please have a look on it. Study Korea website. I am on Study Korea website. I am downloading. This is the file. Here it is a like sorry. Here is the guideline file, and here is the list of the departments for each university. So these two files are already opened here. I'm in Kgsb file, and no details given here regarding the arts. Saeed Ahmed, I think you are confusing two different things. But I will look into these files again, because without the proof, I cannot answer your question. So I will let you know in the next session. I hope you will join me for the next session as well, and tomorrow or day after tomorrow, and then I can answer your question properly. Sir, how is the placement scenario in KAIS? Like, do people pursue engineering or IT get placement in core companies like Samsung, LG? Yes, Samsung, LG, Hyundai, and there are so many companies. Just we know the names of Samsung, LG, and Hyundai, and Postal or something, but there are maybe hundreds of companies, and they are giving the equal salary to engineers and IT department and so many other skilled
employees. So you can get scholarship like job after your masters or phd. But most important thing for the jobs in Korea is generally they ask you for the Korean language, because you are directly in contact, or you are directly talking to the workers and to the staff there in their country, sorry, in their company. And the most of the people in company or in organization institute, they don't know English, or they cannot communicate in English, so they will definitely ask you for Korean language. If you are global Korea scholar, then definitely you know the Korean language, because you learn the Korean language for first year in this scholarship, and then you can easily get the job. I know so many students from Pakistan, India, uh, Bangladesh, some Arab countries, and even some European countries. So they are doing jobs here in Samsung, LG. So no doubt you can get the jobs. ओके सर जी, इस टाइम ही लाइव सेशन रखना, क्योंकि सुबह टाइम यूनिवर्सिटी जाना। यस, हमेशा जो लाइव सेशन होगा वो यहाँ पे इसी टाइम पे ही होगा, क्योंकि पाकिस्तान में जब 6 बजते हैं तो यहाँ पे 10 बज जाते हैं। तो दैट इज़ आइडियल टाइम फॉर मी। ऑफिस से मैं 8 बजे वापस आ जाता हूँ, डिनर करता हूँ, डिनर करने के बाद थोड़ा सा रेस्ट की, चाय पी, तो उसके बाद मैं लाइव सेशन करता हूँ। Foreigners too, but I have heard they prefer Koreans despite even knowing Korean language. Uh, no, there is like difference between getting job as a foreigner and as a Korean. Definitely, if someone with a better skill is there from Korea, then they will hire him. But if you are offering them more skills, and you are experienced, or you have some expertise in that particular field, then definitely they will hire you. And even sometimes these industries mention that they are hiring foreigners because they want to expand their business and their product launching and something for in different countries. Like if you are from Pakistan, there are lots of companies who are looking for the Pakistani student who can help them to launch their business and expand their business to Pakistan or to the Arab countries, or to like different countries. If you are from India, then definitely same goes for you, or any country. So they are always looking for foreigners, because the big companies are not limited to one country or one region. They always search for the opportunities in different countries, and they offer jobs to people from different countries, because the foreigners know better about their country. Like if you are from Pakistan, then you better know about Pakistan, or if you are from India, then you better know about India. So they definitely hire foreigners as well to expand their business, and even for jobs in their own countries like Pakistan, India, or other countries. So there is no problem for this. I think our discussion is going to a different direction now, and it's very late here already. It is 12:43 a.m. So I want to go now, and we'll come again. सर आप स्टडी कोरिया वेब पे नंबर 6 फाइल डाउनलोड करके देखें, काज मैं वही फाइल से कंसल्ट कर रही थी। इज दिस फाइल रिलेटेड टू KGSP? Study Korea. First, second, third, fourth, fifth, sixth. Yes. Okay. So you are actually looking into a PDF file where they mention something, and you are confused about it. So I can save it here and open it. Okay, guys.
Let me search it now. Saeed Ahmed. Just a moment. Sir, my question is that my GPA in Syria is 78 by 12. Can I apply? You can apply by submitting one document from your department that you are in top 20% students in the class or top 10%. So you can apply, yes. But you need one extra certificate or document, just one page with the stamp from your head of department or from professor. Kist. Okay, here is the detail about this. All the degree programs, natural sciences, physics, chemistry, or there is some star application period February 1 to February 6, 26. So they actually mentioned February 1st for February 26. So how you can apply if you are applying through the embassy track? So you do not have time actually now. Uh, so I don't know why this deadline is so early, because the NIIED guidelines were uploaded on 12th or 14th of February, and within 12 days they are closing their applications. Don't know. Official English proficiency test score will be considered for the evaluation. All applicants whose native language is not English are highly recommended to submit. Important note is highly recommended to submit. It is not mandatory. It is just an optional. And if you want to get some benefit, you should submit this score, IELTS, or these scores. Otherwise, it is not mandatory, not required. But Saeed Ahmed, I recommend you not to apply to the KAIST. KAIST is a very high ranked university, and I know many students who were trying to KAIST with 4 or 5 research papers in their masters, and they never got scholarship for the PhD. They mostly select or recommend very highly talented, or like you are talented, I know, but they mostly select people with the some research experience with number of papers and some real life or real world applications. I hope you understand some really good skills in research and softwares and other things. So avoid this university. It is very high ranked, and they generally select very few people, or they recommend very few people with the very extraordinary profile. So whenever you read any instructions or any file, then consider the words highly recommended mean it is not mandatory, but it is optional, and if you submit this you can get the benefit. सर आप बाद में कर दीजिए, आप तो मैंने कर दिया ये। ओके सर, my question is that my GPA in Syria is 78. Can I apply? Yes, you can apply with a certificate. I am the first one in class. Then definitely you are the topper in the class, and you can get a letter, official letter that you got the first position in your class. So submit that certificate and apply, and apply as soon as possible, because in this COVID-19 situation, some courier services are delaying their process. And रिफत सर, आप थक गए होंगे, बाकी क्वेश्चन कल कर लेंगे इंशाल्लाह. I will see you tomorrow, and I hope this was helpful to all of you, and I will come again tomorrow to guide you and answer your questions. uh, Saeed Ahmed, I can suggest to you universities.
All universities are good, but with this CGPA, let me show you. There is a one university, oh sorry, one website, top universities. Go to this website. How we Iram Abbas, no problem. You were late today, but you can join us tomorrow, or you can watch this again when I finish this broadcast or this live session. So, if you are confused about these universities, then I can recommend you university like going to the QS World Rank University rankings. Okay, from here you can get the better idea of these universities and their ranks. Even if you apply to the international university, here is the International University. Uh, International University is not included. Kangwon National University, if your department is in here, then you can apply to this Kangwon University, okay? And you can apply to Kunkuk. This is another good university in the center of the Seoul. So here are lots of chemistry departments, organic, analytical, biochemistry, something. Okay, so I was going to tell you how to find a university. View full list. Full list is here for the top universities. This is the QS ranking. Every year they publish universities ranking list. Okay, then you can select a region or location from here. They changed the website layout actually, and let me check how. Okay, from here you can select the country. Oh, it's very slow. South Korea. I'm going to select South Korea. Okay, now I will get the results for the South Korea. So the Seoul National University is 37th in the world, and KAIST is 39th in the world, and Korea University is 69th in the world, and Pohang University Post-Tech is 77, Yonsei is 85, Songkon Kwang University is 80, Songkyon Kwan, SKKU. Avoid this university, and go to second page. Apply to Chunggang if you want to live in Seoul, which is expensive city. Apply to Dongguk. So these are good universities. Like ranking is really good, 400 in the world and something. But I'm like suggesting you a university where you can get more chances. Inha University, 530 ranking. So these are the university. Aju University. These are like Konkuk University. These are in the best rank, like good rankings, or you can say best ranking because the 1000 out of all over the world, and they are at the 530 or 540 number. सो यू कैन आप लोग यहाँ पे अप्लाई ज़रूर कीजिए। तो इस तरह की यूनिवर्सिटी देखें जो मॉडरेट हो, कोरिया में बहुत हाई रैंक ना हो। इवन इफ यू अप्लाई टू दी these universities like Busan National University or even University of Seoul, Dunkuk. So these are equally good universities, and uh, you can get more chances. Like Gyeongnam University is a very big university in the Daegu city, and it is very famous also here. They have almost so many departments. I cannot mention the number, but so many international students, maybe in thousand. So you can apply to even Yongnam University. This is also good for the chemistry or for the material. Research proposal is not required for masters and PhD. For study plan in SOP, I covered these things in the last session. Or do we write about the field we are choosing? In the personal statement, you need the write the you need to write the motivation, and in the statement of purpose you are asked about your study plan for the degree. Like you can mention your research, you will do research on this topic or in this area, and you will achieve you want to like
make some good material or product or application, and then you will you will try to explore more areas or more fields or more direction within that subject, and you will get the or you will uh, try to utilize all the available facilities at the university and the lab and the department to get good results out of your research. So study plan is here. Here is the Korean language plan and study plan. Within the study plan, you just need to mention about your research uh, few plan about study or research plan, and then you need to mention about your uh, skills. You will try to uh, improve your skills, enhance your skills, and how you will do experiments, how you will do the research, and how you will use these facilities to get better results and achieve the better in your career. सर जी, हमारा 100% स्केल हो बनता है तो हमें एडमिशन नहीं मिलेगा सोल नेशनल यूनिवर्सिटी में। सोल नेशनल यूनिवर्सिटी इज अ वेरी हाई रैंक्ड यूनिवर्सिटी। सोल नेशनल यूनिवर्सिटी में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास बहुत कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोफाइल हो, आप स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और स्टडी प्लान बहुत हाई फाई लिखें, और आप किसी प्रोफेसर से भी ईमेल करके रिकमेंडेशन वगैरह लें। तो मैं आपको इसलिए वो यूनिवर्सिटी रिकमेंड कर रहा हूँ जहाँ पे आप ज़्यादा चांस ले सकते हैं, आपके चांसेस ज़्यादा बढ़ सकते हैं। कोई ये नहीं है कि मैं आपको कह रहा हूँ कि नहीं भाई आप लोअर रैंक यूनिवर्सिटी में पढ़े। दीज आर नॉट एक्चुअली लोअर रैंक यूनिवर्सिटीज। पाकिस्तान में आप देखें कितनी यूनिवर्सिटीज हैं जो टॉप 1000 में आती हैं, और वो भी टॉप 1000 में जिस तरीके से आती हैं उस तरीके से लाइक जहाँ इस तरह जैसे यहाँ पे रिसर्च होती है, फैसिलिटीज होती है, इन्वेस्टमेंट्स होती है, आपके पास 24 घंटे लैब अवेलेबल है, आप जब चाहें कार्ड लगाएं, एंटर हों, अपना काम करें और वापस आ जाएं। वहाँ पे इस तरह की फैसिलिटीज नहीं होती। तो ये जो यूनिवर्सिटीज 30 यूनिवर्सिटीज कोरिया की हैं, ये टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज हैं, लाइक 1000 यूनिवर्सिटीज हैं। इन ईच यूनिवर्सिटी देयर आर मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्टमेंट इन द रिसर्च एंड द एजुकेशन। सो ये बुरी यूनिवर्सिटीज नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको ये यूनिवर्सिटीज रिकमेंड कर रहा हूँ जहाँ पे आपके चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। ये इन्हा यूनिवर्सिटी, मेरी अपनी जो वाइफ हैं वो इस यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट, मतलब इस यूनिवर्सिटी से उन्होंने डिग्री की है। तो मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप ये ना समझें कि सर आप तो अपनी हाई रैंक यूनिवर्सिटी में बैठे हुए हैं और हमें कहते हैं लो रैंक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे आपका चांसेस ज़्यादा हैं, आप कोशिश करें वहाँ अप्लाई करें। और अगर ये ग्लोबल कोरिया स्कॉलरशिप नहीं भी होता तो और बहुत से स्कॉलरशिप्स हैं, ठीक है। तो इसी इससे भी ज़्यादा अमाउंट मिल सकती है, इतनी ही अमाउंट मिल सकती है। वहाँ पे एडवांटेज ये भी होता है कि आपको कोरियन भी नहीं पढ़नी पड़ती है एक साल, वहाँ पे भी आप अप्लाई करें। तो उसके लिए मैं इंशाल्लाह जल्दी कुछ लेके आ रहा हूँ वीडियोस में, मटेरियल इकट्ठा कर रहा हूँ ताकि प्रॉपर एक वे में ना सब चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूँ वन बाय वन। ऐसे नहीं हो कि जस्ट मैं बोलता जाऊँ और बस ऊपर से गुजर जाएं बातें। तो ये मकसद ये होता है लाइव सेशन का कि ताकि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाया जाए कैसे मैं ओपन कर रहा हूँ, क्या चीज़ देख रहा हूँ, कैसे रीड कर रहा हूँ उसकी इंस्ट्रक्शंस, और क्या क्या आपको रिक्वायर्ड है। तो रियल टाइम में जब आप देखते हैं किसी के साथ डिस्कशन करते हैं तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाता है। इसकी निस्बत कि मैं वीडियो छोटी सी वीडियो बनाऊं 5 मिनट की या 3 मिनट की और आपको अपलोड करके दे दूं तो आप जी देख लें, तो उसमें इतना फ़ायदा नहीं होता। कुछ मैं वैसे छोटी वीडियोस बनाता हूं ताकि वो आइडिया, जनरल आइडिया लेने के लिए कि अच्छा इसमें मेजर रिक्वायरमेंट्स क्या है या कौन सी फील्ड इंक्लूड है या इस स्कॉलरशिप में बेनिफिट्स क्या है, वो चीज़ें भी होंगी। लेकिन ज़्यादा जो जो लाइव सेशंस और इस तरह की जो वीडियोस हैं, लेंथी वीडियोस टाइम ज़्यादा लेती हैं, लेकिन उसके अंदर एक दफ़ा आप 2 घंटे देख लें या आप 1 घंटा देख लें, एक 40 मिनट देख लें, तो फिर आपको सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अभी के लिए मैं कहूँगा आप सबको अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग मी। अपनी दुआओं में मुझे याद रखें और मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखूँगा। आई होप कि आप सब के लिए अच्छा हो जो भी हो। तो आपको इंशाल्लाह फिर इसी तरह से मैं गाइड करता रहूँगा। जब भी आप कोई स्कॉलरशिप देखें और आपको कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। आई कैन ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस, ठीक है। तो बाकी क्वेश्चंस के आंसर
Sir, thank you so much, Saeed Ahmed. Stay blessed and hope that you get some this scholarship or any other good scholarship in chemistry. Uh, you can write in the comments in other videos, then I can answer you again and there, or I can recommend you university. I'm going, but I'm answering your question, sir. If I am applying for master's in engineering, so am I required to choose university only from type B, or who can choose? No, there is one thing. Look at this form, right? Start from this form. If you are applying for embassy track or university track, select this one, because I already explained in my previous video, but just before going, I'm going to explain these few things. uh, Choose this one, any of this, and then journal or science and engineering majors of regional. You cannot choose research, you cannot choose overseas Korean, you cannot choose Korean language. These three options are not for you. Journal and science and engineering majors of regional university. If you choose journal, then you can choose any university in type A or type B. Why? I will give you the proof. Okay. But if you are choosing the type B university, if you think that you can get more chances in type B university, and your major is science and engineering, then you should select science and engineering majors of regional university. So there is quota for journal and for the science and engineering majors of regional universities. So now, type A and type B both are included for the journal, and only type B for the science and engineering majors of regional. Now go to the list of universities. Okay, see carefully. Type A is journal, 24 universities or institutes. Type B is journal plus regional, science and engineering, 35 institutes. Okay, I hope you get the answer. If you are selecting journal, there in your application form you can select any university, and you can select any department. Okay, if you are selecting regional, then you should only select universities from this department, and you can only select science or engineering major, like chemistry, physics, mathematics, or something, or engineering materials, chemical engineer, industrial, or something, right? For the regional quota, you cannot select fashion design or social sciences or anthropology or other things, right? So this is the important thing. I hope you got the answer to your question. Otherwise, you can ask me in next session, because it is already 1 a.m. and I am just going to finish this one. सर जी प्लीज मैथमेटिक्स और इंग्लिश की बेस्ट यूनिवर्सिटी का बता देना, जो बेस्ट हो और एडमिशन इजी भी मिल जाए। आप पूसा नेशनल यूनिवर्सिटी को चेक कीजिए, PUS। लेट मी सर्च हियर, पूसा नेशनल यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी है, बुसान इनका एक सिटी है। वो ये वाली यूनिवर्सिटी है। ये वाली फाइल आप 6 नंबर है, स्टडी इन कोरिया में। यहाँ पे ये फाइल पड़ी हुई है बिल्कुल, ये वाली 1 2 3 4 5 6। इसको डाउनलोड करें और इसके अंदर ये देखें जी, पेज नंबर 246 पे जाएं। यहाँ पे मैं 246 पे जाता हूँ अगर, तो इसकी डिटेल्स हमें मिल जाएंगी। कहाँ गया? ओके, नेशनल यूनिवर्सिटी, or just I want to search here. This is the university, 258 पेज। ओके, सो इस यूनिवर्सिटी में आप देख लें, यहाँ पे भी मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स तो आप हर यूनिवर्सिटी में मिल जाएगा। आप आजू यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर लें। आप आजू यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर लें, सोल के से थोड़ा सा बाहर है लेकिन नज़दीक है। अदरवाइज आप कनकुक यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर लें, आप पूसा नेशनल यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर लें, आप हंगक यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर लें। ठीक है, ये वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें इंशाल्लाह आपका ज़्यादा चांसेस बन सकते हैं मेरे लिहाज से। लेकिन अगर इसमें नहीं होता तो आपने डिसर्ट नहीं होना, आपने अपनी मेहनत जारी रखनी है, और किसी और स्कॉलरशिप में हो जाएगा, हो ज़रूर जाएगा अगर आपने गिव अप ना किया तो। ठीक है सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर so many wishes. Stay blessed and stay motivated. Try, try, try and try. Thank you.